Hello everyone, a very warm welcome to Novation. I'm Shantanu and I welcome you all to a very important VARC session जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कई सारे important close passages. So what are close passages? They are nothing but fill in the blanks, but these fill in the blanks will be in the form of a whole paragraph. Alright, so you need to understand the paragraph very carefully. So friends, close passages को हम तीन चीज़ों के नॉलेज से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इज द नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, सेकेंड द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड थर्डली द टोन और द कॉनोटेशन ऑफ द सेंटेंस और द पैराग्राफ. अगर आपको ये तीनों चीज़ें आराम से समझ में आती हैं, आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. एंड दिस सेशन will actually teach you how to do that. So it's going to be really important for your upcoming exams like SNAP, IIFT, XAT and all the upcoming exams. Hence I request you कि आप वीडियो को पूरा देखें और जो असाइनमेंट क्वेश्चन एंड में मैं आपको दूंगा उसको भी सॉल्व कीजिएगा. एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन. एंड प्लीज ऑल्सो विजिट novation.in वेयर यू कैन गेट लेक्चर रिसोर्सेज, यू कैन गिव वेरियस क्विजेस. और अगर आपको नोवेशन का कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो आप नोवेशन को डोनेट करके सपोर्ट भी कर सकते हैं. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट क्लोज पैसेज, so you can read it with me or you can pause and check the answers. Okay, so let's start. The founders of the Indian Republic dash the far-sightedness dash courage to commit. Okay, so here we are talking about the founders of Indian Republic, और जिन्होंने जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब देश को रिपब्लिक बनाया, एज अ डेमोक्रेसी बनाया, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. So this seems to be a pretty positive sentence to me up till now. So let's start. The founders of the Indian Republic first dash the farsightedness. So let's see the option. Have the farsightedness. फ्रेंड्स, क्या हम have यूज कर सकते हैं जब हम किसी पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं? लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर इनोवेशन ऑफ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. सो यहाँ पर have यूज करना गलत होगा दोस्तों. have इज नॉट करेक्ट. has, क्या हम सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल. सो has इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. had, yes, had seems perfectly all right. is तो यहाँ पर tense ही wrong है. So here C is my correct answer, had. Next, Republic had the far-sightedness dash courage to commit. Okay, so let's see the option. Far-sightedness for courage. Courage के लिए far-sightedness थी? नहीं, ये तो गलत है. Courage, far-sightedness and courage to commit. So this looks good to me. It is basically joining these two words. So it's a conjunction and is good. Far-sightedness if courage to commit, if is not correct. Similarly, far-sightedness when courage is also not correct. Far-sightedness and courage to commit dash to two major innovation. अब दो major innovation हुए हैं और उन्होंने खुद को commit किया है. So उनके लिए commit किया होगा उन्होंने. So let's see the option. Courage to commit themselves to the two major innovation looks very good. Commit their what? क्या commit किया उन्होंने? So उन्होंने खुद को commit किया, इसलिए themselves सही है, their wrong है. Commit those to two major innovation, no, wrong. Against, no, against तो है ही नहीं, हम positive बात कर रहे हैं. So here A is my correct answer. Commit themselves to two major innovation of historical significance in nation building and social engineering. First, two dash democratic and civil. So friends, इनोवेशन हो रहा है, अगेन पॉजिटिव कोनोटेशन है. क्या यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए? नहीं. सो लेट्स सी. डिस्ट्रक्ट द डेमोक्रेटिक, नो, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं. पोस्टपोन भी नहीं कर रहे हैं. बिल्ड, यस, फर्स्ट टू बिल्ड डेमोक्रेटिक, दिस लुक्स गुड. सी इज माई आंसर. क्रश, अगेन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड, आई एलिमिनेट इट. टू बिल्ड डेमोक्रेटिक एंड सिविल डेमोक्रेसी, सिविल डेमोक्रेसी सोसाइटी. क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी सोसाइटी आ सकता है? नो, दिस इज रॉन्ग. डीजेनरेट सोसाइटी, अगेन अ नेगेटिव वर्ड. डीजेनरेट मीन्स इमोरल. सो सोसाइटी को इमोरल तो नहीं बनाया उन्होंने, रॉन्ग. पॉलिटिकल सोसाइटी, अगेन इट डजंट सूट. लास्ट इज libertarian society, so basically free society. So this suits here. D is my correct answer. Let's see ahead. Society among illiterate people. And second, okay, अब दूसरी चीज स्टार्ट होगी दोस्तों. To undertake economic development dash a democratic political structure. Economic development भी चाहिए और साथ में democratic political structure भी चाहिए. So economic development will be under or inside this structure. All right. So let's see the options. Civil, undertake economic development within a democratic political structure. So हमारे यहाँ पर democratic political structure है, उसके within हम economic development चाहते हैं. So within looks good. Out of, क्या स्ट्रक्चर के बाहर जाना चाहते हैं? डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बाहर. उसका मीनिंग होगा क्या हम ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं? नहीं, रॉन्ग. एक्सेप्ट,
एक्सेप्ट अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या एक्सेप्ट कर रहा है उसको? नहीं, उसके साथ में हो रहा है. फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, उसके लिए नहीं हो रहा है डेवलपमेंट, उसके उस स्ट्रक्चर में के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए फॉर भी गलत है. विद इन इज माई करेक्ट आंसर. फॉर 7 and 8 विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Hitherto, so this means till now, in all societies in which an economic takeoff or in early industrial and agriculture. So basically hitherto is a negative connotation word. So in all society जहाँ पर economic takeoff हुआ है या early industrial और agriculture breakup, industry और agriculture का breakup हो रहा है क्या? No, there is a breakthrough. जहां पर इकोनॉमिक टेक ऑफ कब होगा? जब इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर में कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई अचीवमेंट होगा. दिस लुक्स गुड. इन ऑल सोसाइटीज इकोनॉमिक एंड अर्लियर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ब्रोक, अगेन दिस इज रॉन्ग. एग्रीकल्चर सप्लाई, अगेन रॉन्ग. वी नीड अ अचीवमेंट, ब्रेक थ्रू. नेक्स्ट, इफेक्टिव डेमोक्रेसी स्पेशली फ्रॉम द वर्किंग पीपल डैश एक्सट्रीमली लिमिटेड. ओके, सो अपन अभी हमको पता है फ्रेंड्स कि हैड यूज हुआ है, दैट्स अ परफेक्ट past perfect tense. So यहाँ पर भी continuously we need to have a past perfect tense. So is wrong. Had been, yes. So from the working people, extremely limited contribution हुआ है. So this looks good to me. Have been, again you are going to present perfect. Has been, again present perfect. So my correct answer is B, had been. I hope this is clear. We'll move to the next question. Now, as per a new report in yesterday's newspaper, dash police dog was taken to parliament. Okay, so dash police dog, a police dog. Okay, so it is it seems good. And police dog, can I use an here? An is used whenever your word has a vowel attached to the, like a vowel is starting the word. So an is wrong. Newspaper, those police dog, we don't know, like we haven't told about the police dog till now, so those is not correct here. There is also similarly wrong. So here the correct answer is A. As per a new report in yesterday's newspaper, a police dog was taken to parliament dash Monday. At Monday, क्या हम किसी प्लेस की बात कर रहे हैं? तो at तो गलत हो गया दोस्तों. On Monday, yes, this is correct. In Monday, again, आप दिन के साथ in use नहीं कर सकते. You are not going inside that. Off is also wrong here. So B is my correct answer in the second. Now next, this was to trace the dash of very important horse which dash reported missing on Monday. So maybe this horse went missing, hence the dogs were brought in to trace something. So let's see. This was to trace the dash of very important horse. So murderers, yes, murderers can be the answer. Officers, क्या horse का कोई officer हो सकता है? Of course not. So this is not correct. Minister also not correct. अपन horse की minister की बात नहीं कर सकते. Again, police for horse is wrong. So here the dog was brought to trace the murderers. Okay. Which dash reported missing on Monday. Okay, so now this horse must have went missing. So let's see, the important horse which is reported missing on Monday. Okay, so can I use is here? Since the whole sentence is in was, I cannot use is. R is also wrong. We are not talking about present or plural. Here were is also not wrong. Was is the correct one because only one horse was there, important horse. So was is my answer here. Next, the dog picked dash the scent of some smell of. Okay, so the dog picked, उसने कुछ उठाया, the smell. So let's see, picked off तो गलत है friends, this cannot be the right one. Picked on, it is also not correct. Picked up, yes, it picked up the smell, the scent of some smell. So up is my correct answer here. In is not correct, picked in कुछ नहीं होता दोस्तों. Next, smell of dash and ran a few yards before losing the. Okay, so they picked up smell of something. So blood, yes, blood can be the answer. Dust ki smell does not seem correct here. Air is also not correct. And smell of investigation, this is also not correct. My correct answer is blood here. They smelled blood. Okay, अब last two options हम अगली slide पे देखेंगे. And ran a few yards before losing the dash. So they lost, dogs lost something. Did they lose the game? No, this is not a game. They did not lose a bet. They did not lose the world. They lost the track. वो ट्रैक भूल गए कि वो कहाँ पे गए हैं मर्डरर्स. सो ट्रैक इज माई करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द पुलिस डैश लॉन्च्ड अ विगरस. सो पुलिस ने कुछ लॉन्च किया. पुलिस हैज लॉन्च्ड. कैन आई यूज हैज विद पुलिस? Police is a collective noun. I cannot use has with it.
सो आर भी यूज नहीं कर सकता. हैव, यस, हैव इज करेक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ परफेक्ट टेंस एंड पुलिस इज अ कलेक्टिव नाउन. सो विल इज रॉन्ग, हैव इज करेक्ट. नेक्स्ट, लॉन्च्ड अ विगरस डैश इनटू द होल अफेयर. सो पुलिस क्या लॉन्च कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन, हाँ कर सकती है लॉन्च. रिकॉर्डिंग लॉन्च करेगी क्या दोस्तों? नहीं. कंट्रोल लॉन्च नहीं कर सकते. ओवरऑल मीन्स टू रिपेयर समथिंग. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. माई इन्वेस्टिगेशन इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट, mass communication is the delivery of dash ideas and entertainment to thousands of millions of. Okay, so here we are talking about some mass communication like maybe newspaper, television, internet, etc. So it delivers dash ideas. What types of ideas? Let's see. Orthodox यानी पुराने या ओल्ड फैशन आइडियाज. इट कैनॉट बी लाइक ऑलवेज हमें पुराने आइडियाज नहीं मिलते हैं. सो दिस इज लिमिटिंग माई स्कोप. सो ऑर्थोडॉक्स इज नॉट करेक्ट. न्यूज आइडियाज, yes, probably because mass communication is also a important means of getting news. So this is okay. Items ideas, no. Cartoon idea, no. This is a funny option. My correct answer, like out of them, news is the best one. And entertainment to thousands or millions of people, yes, looks good. लोगों को entertainment मिलता है, हाँ. Pictures, no. Ads, no. Why would we entertain ads? And machine को भी हम entertain नहीं करते हैं. So A is my correct answer. Next, millions of people simultaneously. It is a force with incalculable dash on today's world. Okay, so this is kind of a force which is having incalculable something on आज का world. Okay, so let's see. Incalculable worth. Okay, it can be like very important. So worth seems good. Incalculable impact on today's world. This is very good option. I would say B is greater than A, better than A. Why? Because here we are talking about a force. सो मास कम्युनिकेशन एक टाइप का फोर्स है. अब फोर्स अगर किसी को लगता है तो इट मेक्स एन इम्पैक्ट. ओके, सो इम्पैक्ट इज बेटर देन वर्थ हियर. ओके, वैल्यू भी हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो इट इज सिमिलर टू वर्थ. नेक्स्ट, प्रेशर. नो, इट इज नॉट गिविंग अस एनी प्रेशर. आपको देखना है मास कम्युनिकेशन, यू कैन सी. अदरवाइज इट इज नॉट प्रेशरिंग यू. सो इम्पैक्ट इज द बेस्ट आंसर हियर. नेक्स्ट, द डैश ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट्स डैश द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटर. ओके, जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके स्किल की बात हो रही है और किसी और चीज के बारे में बात हो रही है, मास कम्युनिकेशन के बारे में. लेट्स सी द ऑप्शन. द डैश ऑफ मास कम्युनिकेशन, द सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन. बिल्कुल, सक्सेस बताने वाले के स्किल्स पे डिपेंड करेगा. सो सक्सेस इज गुड. फेलियर डिपेंड करेगा. वी जनरली डोंट यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक आपका फेलियर आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा. सो फेलियर आई विल नॉट यूज. द डेंजर ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट ऑन द स्किल्स, नो. The fun, again, fun is not correct. I would say that A is the best choice here. Rests dash the skills of communicator. So rest inside the skills, no. Upon the skills, yes. In the skills, no. Against is also wrong. So it rests upon. उसके shoulders या उसके skills पे बहुत depend करेगा. It depends upon the skills of the communicator to dash the recipient thinking. So अब जो skills हैं वो किसी recipient सुनने वाले के थिंकिंग पर क्या असर करेंगे. सो विल इट स्टिमुलेट, हाँ हमारी आइडियाज को स्टिमुलेट करेगा, एनकरेज करेगा. एजिटेट, नो. वी आर हैविंग अ पॉजिटिव कॉनोटेशन. मैं नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करूंगा. मिनिमाइज द थिंकिंग, नहीं. रेसिपिएंट की थिंकिंग को अपन छोटा नहीं करना चाहते हैं और उसकी थिंकिंग को समझना भी नहीं चाहते हैं, उसको स्टिमुलेट करना चाहते हैं कि वो नए आइडियाज को, न्यूज को समझे. सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. द रेसिपिएंट थिंकिंग. अब आगे के हम ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे. Dash stir emotion. For stir emotion, thinking for, no. Thinking to stir the emotion. ऐसी सोच बनाई जाए जिससे emotions stir हो सके. So 2 is the correct one. With no. From stir emotion, no. 2 is the correct answer. To stir emotions, to dash him, to persuade him or her, to encourage him or her, to discourage him or her. discourage तो बिल्कुल नहीं आएगा. to endanger, उसको danger में डालना भी नहीं आएगा. so persuade और encourage में से ज़्यादा सही क्या है friends? I would say encourage will be much better because here we are encouraging him. We are not trying to persuade him to do something. We are not forcing or deliberately saying कि आप ये करिए. हम उसको encourage करना चाहते हैं किस चीज़ के लिए? him or her to act. कुछ करे वो. We are encouraging him. Okay, so here B and A makes the perfect choice. Next, without water, dash animal can survive. Let's see the option. Every animal, no. All animal, no.
no animal can survive. Only animal can survive is also wrong. But many creatures are able to make use of dash little water that exist in arid areas. So कुछ ऐसे creatures हैं जो use कर भी पाते हैं जो थोड़ा सा water बचा है. So let's see. Many creatures are able to make use of what little water that exists in arid areas. Okay. So what I don't think is the correct option because we have one better article that is the. क्योंकि हम उस particular water की बात कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है. Hence the is the correct article here and what is not suitable. Next, use of very little water that exists. No. Use that little water again. No. We cannot use that again in the sentence. So here the is the correct word here. One of the nature's masterpieces dash creatures equipped to dash with desert life. So here there are certain masterpieces creatures. कुछ ऐसे masterpiece creatures हैं जो desert life में रहने लायक हैं, like hardy camel. So let's see the options. One of the nature's masterpieces for creature. क्या नेचर ने क्रिएचर्स के लिए मास्टरपीस बनाया है? ये बात नहीं हो रही है. हम उन क्रिएचर्स की बात कर रहे हैं. अबाउट क्रिएचर इक्विप्ड. नो. अमंग क्रिएचर्स इक्विप्ड. सो एक हार्डी कैमल उनमें से एनिमल्स में से है. इट इज अमंग दोज मास्टरपीस क्रिएचर्स विच आर मेड बाय द नेचर. सो अमंग इज द करेक्ट वन. विथ अगेन इट इज रॉन्ग. वन ऑफ द नेचर्स मास्टरपीस अमंग क्रिएचर्स इक्विप्ड टू die. No, it doesn't die. It resist. No. Cope. Yes. So hardy camel can cope with desert life. It is the hardy camel. So C is my correct answer. Fifth one. Stories range the desert land far and wide about dash in endurance feats by camels. So remarkable. Yes, remarkable endurance होता है उनमें. So remarkable looks good. Little. No. कम endurance नहीं है उनमें, ज़्यादा endurance होता है because stories are going about them. Popular, again wrong adjective. Tolerate, again wrong. So A is the remarkable correct option. Next, so this is the last one. The year was 1913. Okay, the Wright brothers had just dash in making a aeroplane which dash flew high. So Wright brothers ने कुछ aeroplane बनाया which was flying high. Okay, so let's see the option. क्या वो फेल हुए? अगर वो फेल हुए होते तो क्या वो हाई उड़ा पाते? नहीं. इन्वॉल्व भी गलत है. डिस्कवर, वर दे डिस्कवरिंग समथिंग? नो, दे इन्वेंटेड और दे क्रिएटेड. सो डिस्कवर इज ऑल्सो रॉन्ग. सक्सीडेड. जी हाँ दोस्तों, वो सक्सीड हुए इसलिए वो उसको उड़ा पाए. इन मेकिंग एन एरोप्लेन विच डैश फ्लू हाई. सो हार्डली, अगर हार्डली वो उड़ पाता है तो क्या वो सक्सेस होती है? नो, हार्डली इज रॉन्ग. रियली फ्लू हाई. दिस लुक्स गुड. हाईली फ्लू हाई. क्या हम हाई 2 बार यूज करेंगे? नो, डजंट लुक्स गुड. सिंसियरली फ्लू हाई. सो दिस इज द फनी ऑप्शन. नो, दिस डजंट सीम गुड. रियली इज द बेस्ट ऑप्शन हियर. I was deeply interested in dash and was making my own dash with flying machines. Okay, so some author is also interested in something. So let's see. Interested in science. अगर वो साइंस में इंटरेस्टेड होता तो वो खुद की फ्लाइंग मशीन बनाने का सोचता, पॉसिबली सोचता. ओके, लेट्स टेक दिस असाइड. हिस्ट्री, नो, परफेक्टली नो. फ्लाइंग, ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग. सो साइंस से बेटर ऑप्शन है फ्लाइंग, कि वो भी फ्लाइंग में इंटरेस्टेड था. ओके, सो सी इज माई करेक्ट आंसर. And was making my own dash with flying machines. So was he making judgments? Probably no, wasn't. He was making experiments. Yes, he was also doing experiments with machines because he was really interested in it. He was also like my own trying with, no. My own indulgence, no. Correct answer will be experiments, right? I really dash in that little machine. I had dashed together and decided it was time to prove its merits. Friends, these two options, ये आपके assignment questions हैं. So what you have to do, you will tell me these answers, these options in the comment section. Like 5 का आंसर क्या है, 6 का आंसर क्या है, आप मुझे बताइएगा comment section में. Alright friends, so with that we come to an end to this session. Thanks a lot for watching it till the end. I hope the video was helpful और आपको कल के पेपर के लिए भी इसमें बहुत help मिलेगी. This session was actually about to come yesterday, but I was really stuck in something, so मैं इसको release नहीं कर पाया कल. I'm really sorry for that. But still I'm sure आपको ये video अच्छा लगा होगा. So please give it a thumbs up, share it with your friends and subscribe to Novation for more important content on VARC, verbal ability, general awareness and business awareness, etc. And friends,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ विजिट novation.in। अगर आपको नोवेशन का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप नोवेशन को डोनेट करके सपोर्ट करिएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आई विल मीट यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर।